जी, अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ये इस हफ्ते जो है काफ़ी सनसनीखेज खबरें थी। अब आप पता नहीं कौन सी खबर को पहले कवर करते हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे पहली सनसनीखेज खबर थी वो ये थी कि पीबीएच की एपिसोड आ गई भाई इस हफ्ते। हाँ यार, मुझे शेड्स बना दिए हैं आपने, मैंने देखा यार। क्या क्या करना पड़ता है यार मंजन बेचने के लिए। देख लेते हैं, नहीं वैसे लोगों को पसंद आ रही है। ये ऑनेस्टली मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जो लोग जिन लोगों ने पसंद किया, जो जिन जिन लोगों ने फीडबैक दिया। यही फीडबैक है जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते नहीं तो हर दूसरे हफ्ते एक एपिसोड जो है वो आपके लिए पब्लिश कर दी जाए। तो अशर भाई, कैसा लगा आपको? कोई प्लॉट वगैरह लिया अभी आपने कि नहीं? यार मैं सोच रहा हूँ, और प्लॉट लूंगा तो आपसे तो नहीं लूंगा यार। आपसे ही लेना है यार, गलत बंदे लग रहे हो यार। सही है, सही है। तो अब आप बताएंगे फिर किससे प्लॉट लिया जाए? कहाँ पर जो है ना वो सही प्लॉट मिल रहा है, कहाँ पर डील्स अच्छी हैं? यार अभी तो डील्स, ज्ञान उस पे हमें अलग से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना होगा। अभी फिलहाल तो मैं इस पे बात कर लेता हूँ कि इस मार्केट में क्या हुआ है, स्टॉक मार्केट में। फिर हम रियल एस्टेट मार्केट में भी आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले यहाँ पे ग्राउंड बना लें। So essentially, we're setting for the week of 18th of November, week ending 18th of November. Anyone who hasn't viewed the disclaimer, please do so as of this very point in time by recording, by pausing the video. Please do note that by viewing this video, you are agreeing to waive all liability of losses you may suffer. If you do not agree to any portion of the recording, you may discontinue now. With that, Dow Jones flat, S&P was flat, Nasdaq was down 1.6%. The week last week was very good. Start of start not start of very good. Last week ended very good on a very high note, और वो जो एक मोमेंटम था वो सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट। FTX का ब्लो अप हो रहा था, क्रिप्टो में ब्लो अप्स हो रहे हैं, एंड उसके साथ साथ जो सेंट लुइस का फेडरल रिजर्व चैप्टर है, उसके प्रेसिडेंट जेम्स बुलार्ड ने कहा है कि सेंट्रल बैंक के जो फेडरल फंड्स रेट हैं, व्हिच इज द इंटरेस्ट रेट्स दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर सो मेनी वीक्स, could be as high as 7%. इस वक्त जो रेंज है वो अपर रेंज 4% है, तो इस वक्त 4% पर चल रहे हैं फेडरल फंड्स रेट। कुड बी एज हाई 7%। इन्फ्लेशन इज लेट्स से अराउंड क्या कहते हैं 5%। एंड basically, Druckenmiller, who was a very famous investor, said that in his experience, in his decades of experience, he believes that the interest rates would have to actually exceed the inflation rate, the rate of inflation, to actually be able to bring the inflation down, which means that 7% seems a very decent target. Now, that's scary, obviously, knowing the fact that 7% means you have 300 basis points increase from here until we reach 7%. And मतलब इसका मतलब ये कि बहुत सारे 75 basis points के increase आते रहेंगे until we increase notch up to 300 basis points up to 7%. That is not the official guidance of the Federal Reserve. That is just an opinion from one of the people who helped set up this policy. अब क्या कहते हैं, we'll see how it goes, but net for the market, that's going to be very bad. In other news, former President Donald Trump formally filed for a notice for his third run for the White House. Why is it important? Well, it's important for a couple of reasons. As you know, I mean, for the stock market, obviously, as you know, Donald Trump was, when he was there, oil stocks were pushing higher. He has a huge Republican base or voter base in down south Texas, where a lot of shale plays are happening. So therefore, a lot of this is going to be very, very positive for natural resources, coal stocks, oil stocks. Matlab could be, obviously this is a running theory of what we've seen during his last term. Uske saath saath, as you know, Rumble is one of those stocks that actually recently has gotten a lot of love from the investors. And basically, it's a
it's a it's a sharing platform, so media platform, an alternative media platform of sorts. ज़्यादातर platforms पे ट्रम्प को, जैसे ट्विटर पे ट्रम्प को बैन किया हुआ है, right? I think Facebook has also banned Trump, so he's not really able to speak to his followers, etc. So Rumble is a place where they're trying to build some sort of alternative media outlet, and I think that stock's gotten a lot of love. And if this comes obviously his way, I'm sure this stock is going to continue to get some love. I could be wrong. 13F filings, which are the most interesting thing and the most exciting thing that has happened. Abdullah, 13F follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कुछ idea है 13F है क्या? Filings होती क्या हैं? 13F फाइलिंग्स 13 पेज की कोई फाइल होती होगी ये। हाँ, यही है। बस इसी तरह चलता रहा तो ये क्या कहते हैं, मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं एक बहुत बुरा टीचर हूँ और मेरे स्टूडेंट्स फेल कर रहे होंगे यकीनन पूरी दुनिया में, अगर मैं कहीं क्लास पढ़ा रहा होता। व्यूअर्स जो है ना वो ये सोच के परेशान हो जाएंगे कि हम इन लोगों को, मतलब मुझे सुन रहे हैं, मैं इस शो का होस्ट हूँ, ये होस्ट है जो 13F फाइलिंग्स के बारे में। तो यार 13F filings basically जितने भी hedge funds हैं, basically you have to I can't remember what the certain threshold is, but above a certain percentage, I think 100 million, if you're investing more than 100 million in the stock market in the US, you run a fund that is investing 100 million, even individually, I think 100 million is threshold. You have to publicly declare that. You have to file what is called a 13F filing with the SEC, and you have to actually declare कि आप क्या hold करते हैं अपने पास, आपकी होल्डिंग्स क्या हैं. You have to make it public. अच्छा, चक्कर क्या होता है कि they have hedge funds or individual investors have around 45 days to actually make the filing. So let's say अभी ये quarter end हुआ था, third quarter end हुआ था सितंबर में, राइट? तो 13F फाइलिंग्स आई हैं अब, बेसिकली we're looking at नवंबर, तो पूरा अक्टूबर गुजर गया, अब नवंबर के फर्स्ट 10 डेज में फाइलिंग आई है, ऑलमोस्ट 45. सो बेसिकली टेक्निकली दे हैव अबाउट 45 डेज टू रिपोर्ट इट. और चूंकि ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं बताना चाहता, क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग योर सेल्फ अब्दुल्ला, कि आपके पास क्या क्या खजाने छुपे हुए इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ के, तो लोग ये करते हैं कि आखिर तक रखते हैं उसको 44th डे तक या 45th डे तक, और फिर रिपोर्ट करते हैं कि उनके पास एक्चुअली है क्या, चूंकि ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू लेट देयर कंपेटिटर्स नो कि उन्होंने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया है. सो दिस इज अ लिटिल बिट डेटेड, little bit old, but it still gives you amazing insight into some of the names that obviously some of the big investors are holding. ऐसा ही बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, और इन सब लोगों को फॉलो करने की कोई ना कोई वजह होती है, और उनमें सबसे बड़ी वजह ये कि ज़ाहिर है ये सीजन इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको पता होता है बिजनेस किस तरह चलते हैं, किस तरह डूबते हैं, किस तरह चढ़ते हैं. तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ज़ाहिर है इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है. 13 पेज की फाइलिंग, 13 पेज की फाइलिंग, बिल्कुल आपने बिल्कुल इसको सही समराइज किया. ये Brad Kellner, I think Kellner, from Stock Compounding, I think he's put up a great resource here. He's actually compiled the 13F filings, and it essentially shows the top 5 holdings and kuch additions, jo smaller additions on the right side in the blue, and basically he's highlighted for majority of the investors, bade investors jitne bhi hain. You have Guy Spear here, Nick Sleep, amazing big huge investor, Norbert Liu, Bill Ackman, Warren Buffett, Charlie Munger, of course, huge guys. Stan Druckenmiller, I was just talking about him. Boppost group ka Seth Klarman, amazing. Some of these, Tom Russo, wow. I mean, Chuck Yeager. These are some of the these are like जैसे कहते हैं ना, मतलब top लोग जिनको मतलब हम मतलब जिनके नाम हमने घोल कर पिए हुए हैं, और जिनकी इंडिविजुअल होल्डिंग्स हमने मतलब कोशिश करते हैं कि याद रखें.
I can see a stock that I actually invested in some time back. You can see David Ironhorn, Greenlight Capital, GRBK, which is Green Brick, which is house builder. And इस तरह के ideas मुझे भी यहाँ से मिलते रहते हैं. अब सवाल Yeah. ये है कि ज़ाहिर है ये इम्पोर्टेंट तो हैं, जो जो इनकी होल्डिंग्स हैं इम्पोर्टेंट तो हैं और टॉप 5 हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या सिर्फ़ ये देख के कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इन इन टॉप 5 के अंदर से जो भी उसको समझ में आए थोड़ा बहुत, क्या वो खरीद ले, या इसके साथ-साथ कोई अपनी स्ट्रैटेजी फिर भी होनी चाहिए? ये देखें, हर इन्वेस्टर को छोटा बड़ा, सीजनड नॉट सीजनड, वेटरन नॉट वेटरन, एक्सपीरियंस नॉट एक्सपीरियंस, हर किसी को अपनी वेटिंग करनी पड़ेगी. एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर वन थिंग के it's important to understand that your picks are something that you believe in. These are stories that you believe in and you believe that they will succeed. At the end of the day, the most difficult thing to do investing is to actually stick to your ideas. Usually अगर किसी और का idea होगा तो you will not believe it in the same way that you believe in your own ideas. Just the way that आपको अपने ऊपर जितना एतमाद है, अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस है, अपनी स्किल्स पे जितना कॉन्फिडेंस है, या रिलायबल आपको अपना आप जितना रिलायबल लगता है, दुनिया का कोई शख्स नहीं लगता होगा, राइट? एंड दैट सॉर्ट ऑफ मीन्स दैट आप किसी और के आइडियाज उस तरह यकीन नहीं करेंगे उस पर जब तक आपने उसको अपना आइडिया ना बना लिया हो. तो व्हाट आई वुड टिपिकली डू इज आई लुक एट दिस एज अ स्कैनर फिल्टर. चूंकि इनके पास दुनिया भर ये वो लोग हैं भाई, ये वो लोग हैं जिनके पास से दुनिया भर की न्यूज़ आ रही है, दुनिया भर की इंटेलिजेंस आ रही है, बिलियनर्स हैं ये, ठीक है ना? एंड इट्स लाइक इंफॉर्मेशन एंड स्टॉक ideas are flowing to them left, right, and center, and we get to see that information flow. We get to see the outcome of that information flow. कि ये जो सारी information इन्होंने collect की है, इसका outcome क्या है कि बफेट ने ये खरीद लिया, इसका outcome क्या है कि स्टैन ड्रकनमिलर ने ये खरीदा हुआ है, राइट? इसका आउटकम क्या है कि वैल्यू एड कैपिटल का जेफरी यूबन ने ये खरीदा हुआ है, एंड he's added this to his portfolio, and that gives you some confidence कि यार if this is, for example, I can clearly see Prem Watsa at Fairfax Financial has actually added Micron, and Micron is a stock that I actually own, and it's, obviously, as I've previously said, all of this is education material and none of this is investment advice. Micron is something that I've been following for a long time. It has an amazing thesis that I believe in, but I actually started out by discovering this through Munish Pabrai. Pabrai का भी यहाँ पे कहीं होगा, I can see, Munish Pabrai of Pabrai Funds. And Pabrai ने भी Micron यहाँ पे add किया था, and this was a long time back, and he used to talk about this being one of his bigger holdings, largest holdings actually, one of the larger holdings in the US. And मैंने उधर से अपनी research शुरू की, and I felt like Micron had a lot of weight. And I'm glad to see that this is one of those stocks that has been added by Prem Watsa. Now, obviously, इस वजह से हो सकता है कि स्टॉक चढ़ा भी हो ऊपर, राइट? पिछले हफ्ते माइक्रोन काफ़ी ऊपर गया था और फिर वापस सारी हवा निकल गई उसमें से. बट द थिंग इज, यू गेट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि इस तरह की चीज़ें गिव यू द कॉन्फिडेंस कि यार, इफ़ यू ऑलरेडी हैव, फॉर एग्जाम्पल, ट्विटर. डेविड आयरनहॉर्न एडेड ट्विटर. Okay, now that is something significant, right? When David Ironhorn adds Twitter, you better be thinking about it, right? And now it doesn't mean that you should add Twitter to your portfolio, but it just means it's something to think about. Some of the things that I was looking at, and I just want to highlight, and we'll take a look at them briefly, is that Warren Buffett ne TSMC hold add kiya, which is Taiwan semiconductor company TSMC. If you know TSMC or you don't know, basically TSMC is a Taiwanese chip manufacturer, basically, and it basically manufactures, packages, tests, and sells integrated ICs, integrated circuits, and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, and the Middle East, Africa, Japan, US, and internationally. Quite a big deal.
And obviously, like if I could look at the numbers, like amazing numbers, return invested capital, solid return invested capital, 20% on average. Free cash flow has क्या कहते हैं free cash flow होता था पहले 74 cents on the dollar, gone up in the last let's say 15 years to 1 point, 1.8. Recently, actually, it's moved higher to $3. Insane growth for free cash flow, solid return on invested capital, and when you look at recently what it's been trading at, so it's actually it's been actually trading at a much lower multiple versus what has been happening in the past. It used to trade at much higher multiples versus the 18 multiple that it actually trades at right now. So TSMC, again, amazing addition. If you look at the chart, it's insane. Like क्या हुआ है बफेट की होल्डिंग के बाद से ये मेरे ख्याल से so let me sorry Taiwan okay, yep. So as you can see, big picture, the stock is moved from मतलब $6 का होता था back in 99. आज $80 का है, moved up more than obviously 10 times, 10 to actually 15 times. And क्या कहते हैं, recently it drew down from all the way from $140 to $60. इससे पहले कि बफेट की बात हुई कि ये ऊपर जाने वाला है. And a lot of other news obviously relating to Taiwan Semiconductors, why it's there, why it's not, but this is up to you. You should do your own research and try to figure this out. What else? So we have TFPM, we have Lilly, we have Amazon. Amazon is a huge addition by Druckenmiller. So we have NVDA. NVDA, Bill Stewart from Stewart Asset Management actually ended up adding NVIDIA. I think cost is Costco, which is an amazing stock to look at, if I'm not wrong. Yeah, मैंने Costco के बारे में पहले ही बात की थी. Defensive name, solid return invested capital. Wow, just wow. Free cash flow growing from $1 to $17. Absolutely brilliant. You don't even need to look at the stock chart, but even if you want to look at it, here you go. Just boom, like just look at this beauty. मतलब $30 से 20 साल पहले $30 था, आज $500 है. मतलब this is retirement money, yaar. This is retirement money. This is what I'm talking about. Insane stuff. NVIDIA, again, a great stock, great story. Is just short term. I think it's been a little bit oversold in my opinion, because some people have obviously their ये जो पूरा क्रिप्टो की स्पेस है, इसको NVIDIA ने बहुत ज़बरदस्त बूस्ट किया with their GPUs and gaming and a lot of other stuff, that virtual reality, that they feel that a lot of this is a larger bets, part of the larger bets that might not happen, and NVIDIA sinks through the roof. Return invested capital की history बड़ी up and down है. It's not really stable. Free cash flow, they've been able to grow it tremendously, but again, not really stable, up and down here and there, and therefore obviously the stock is accordingly on shaky grounds. Nevertheless, I mean, what a run, what an absolute run. पिछले 20 साल में from $5 to like मतलब went up to $400 यार. That is an 80x. Right, that's an 80x. Like, wow, you could have like $10,000, you could have converted that into $800,000 if you invested in 2000 in the stock. That is some amazing, phenomenal growth. Obviously, a lot of that has to do with a lot of speculative ideas, a lot of the fact that ये एक बड़ा मतलब meme stock तो नहीं, but ये एक पूरी Robinhood की community में बड़ा hot चला. But मुझे personally I feel like if I do a quick read on this, let me just go to the I've done some charting on it already. मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि on the fib patterns, अगर ये peak है तो maybe it retraces back to the 140 level, 132 140. मेरा 132 पे बैठे है, that probably it retraces around the 132
sorry, 142, 142, and then it moves back, starts to move higher. But abhi is waqt jo recession ki situation hai and wo sari, plus the expectations, they actually underperformed. They actually reported 58 cents on the dollar, while estimates had them pegged at 71 cents. So obviously disappointing earnings, not really much to say right now. एक और चीज जो मुझे हमेशा something to, I don't want to be a drag on this episode, but this to be a drag, but एक और चीज जो मुझे हमेशा महसूस होती है कि people don't understand this fundamental thing. Look, you have stop being emotional about stocks, and I'm saying this to myself. You have the opportunity to purchase anything. You have all these ideas, amazing ideas, and all you need to do is purchase winners. Now, itna aasan hota nahi, but of course, a starting point is कि भाई कौन सा stock 30 to 40% growth. मतलब for me, for example, a runner would be कि भाई कौन सा stock 30-40% growth top line bottom line में दे रहा है, right? I mean, if a stock is giving you that sort of run in terms of quarterly earnings, for example, आप ऐसे स्टॉक मतलब डेफिनेटली फिल्टर आउट कर पता कर सकते हैं. मैंने आपको फिनविज का दिखाया भी था, इफ यू रिमेंबर अब्दुल्ला, ठीक है ना. एंड यू कैन, आई थिंक यू कैन फिल्टर दैट बाय क्वार्टरली एज वेल. In fact, if I'm not wrong, there's a stock screener right here. I've actually built a custom stock screener here as well. मैंने यहाँ पे ROI FCF filter लगाया और अपनी market change की to US, and like boom, I get the cheapest, so I can even do that above 25% मुझे चाहिए, and I need the cheaper stocks. I need EPS annual growth. सबसे ज़्यादा growth किसने मुझे दी है? Nope. Right? And then I can start my way looking at, okay, क्या यार 25%, 9 times P, insane growth, ये क्या हो रहा है भाई? Calm main foods. I click on it, I see the chart. Interesting, very interesting stuff. I don't know what they do, but it sounds very interesting to me. They had some sort of insane growth. Like there are a lot of stocks like Moderna sab jante hain, vaccination, ROIC amazing, price to earnings insane 6.7 times, insane growth last year in the last year. तो ये चीजें आप देख सकते हैं. And you can also look at, okay, यार earnings disappoint की थी, so maybe you don't want to look at it, you want to look at other stocks. तो point is कि भाई बहुत सारी Conoco is another name. ConocoPhillips मैंने पहले ही बात की थी. Oil stock actually surprised. यहाँ पे देख लें, मैं इस Conoco को दिखा देता हूँ जल्दी से. Actually surprised by 5%. So this is where you want to start then looking and further looking into this. At the end of the day, you don't need to be emotional about anything. You have a huge list of stocks to filter down from. Start by looking at भाई कौन से in the short, अगर आपको short term trading भी करनी है, swing trading भी करनी है, तो you'll have to actually look for companies that are reporting successively in the successive quarters. For multiple quarters in the past, they've been reporting earnings growth 30-40% at least, right? And that's something that you can always bet on. Doesn't mean that they will continue to perform in the future as well, but at least you can do some, that's a start. You have to get a start from somewhere in terms of getting your homework started. And that's a homework that, why would you go for loss-making companies? I never understood this point. There are companies that I hold, by the way, I mean, in fair disclosure, there are loss-making companies, but that is something, that is an idea that is very, very long-term, right? Matlab, that is a very, मैं swing trading के लिए उसको कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा. I would never use a stock that has been disappointing earnings and trying to swing trade it. Recently मैंने Meta को swing trade करने की कोशिश की थी, and basically what I did was, और इस पे मेरी काफी जान निकली. What I did was I caught it around $100 पे मैंने इसको पकड़ा था, right? And basically मेरी theory ये थी कि ये जो gap move हुआ है, it's going to try to fill it back, right? And it's still going to make it down. So overall जो trajectory है वो overall तो रहेगी. If you look at the weekly, overall जो trajectory है वो तो overall रहेगी. But the thing is, there's going to be a turnaround. और वो ही हुआ. If you can see, हुआ ये कि मेरा यही point था कि ये after successively falling down in such a big way, it will try to move back higher.
Looking back at some of the moves that is made in the past, it will try to move back a little bit higher before continuing to move down. And वही हुआ कि it tried to move back a little bit lower to 89, 90, जिसमें मेरी थोड़ी बहुत जान निकली थी. But then ultimately it moved back to 112, 114. और मतलब for me, मैंने 100 पे खरीदा था, could have bought it at 88, 89. That you can never 100% time the market, but मेरी theory successful रही. I wanted to trade a rebound, a short-term rebound, and see if it kind of, if I can profit off of that. And मैंने वो profit लेकर घर चला गया. I wasn't fundamental about it because I know that the company is continuously disappointing on earnings and the guidance is also negative. Right? So like you have to be able to mix and match and understand कि आप करना क्या चाह रहे हैं. मैंने हमेशा कहा you have to go into a trade. Always remember, you have to go into trade. Before you go into it, understand what you're trying to do. Make a game plan. Is this a swing trade? What are the areas of support and resistance that I've identified? अगर यहाँ पे resistance वो मतलब यहाँ पे resistance तक पहुँचती है and उसको resistance मुझे महसूस होती है कि भाई यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही, sell it. And that should be your game plan from day one कि आपको profit, you should know where to book your profits and you should know when to sell कि अगर नीचे जा रही है and your theory is proven wrong, sell it. Right? And some people may have more temperament, some people may have more experience and others may not. It's always best to understand कि यार ये स्टॉक में जो खरीदने चाह रहा हूँ इसके ये फंडामेंटल्स हैं और ये लॉन्ग टर्म प्ले है, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, मुझे नहीं पता बीच में आंधी आए तूफान है. एंड बट ये वो स्टॉक्स हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं मुझे. एंड आई हैव अ थ्योरी अराउंड दैट, आई हैव अ स्ट्रक्चर दैट आई हैव आइडेंटिफाइड फॉर माय स्विंग ट्रेडिंग प्लान. एंड अगर वो स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट हो जाता है, आई वॉक अवे विद अ प्रॉफिट. Doesn't matter if it goes further up from my target. Doesn't matter if it goes down from where I expected it to. My buying price was. मैं बेच दूंगा या मैं ऊपर भी बेच दूंगा, मैं नीचे भी बेच दूंगा. Right? तो ये see, these are some things that you have to keep in mind. To top it all off, dataroma.com. Go there. There's ticker.com as well. Go to dataroma.com. You'll find all the क्या कहते हैं जितने भी ये मेजर 13F फाइलिंग्स हैं सारी आपको विद अपडेटेड डेट्स आपको मिल जाएंगी. यू कैन लुक एट ऑल गाय स्पियर, खान ब्रदर्स, ट्रिपल फ्रॉन्ट पार्टनर्स, सेथ क्लारमन, कार्ल आइकन, all their portfolios and updates will be here. Also, like what are the big bets, top big bets, Berkshire Hathaway, Micron, Bank of America, Apple. तो आपको different filters के तौर पे भी top 10 buys last quarter, top 10 buys last quarter by percentage, so ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी here. Very nice, very solid stuff. Go have fun and keep reading and keep researching and keep trading responsibly. मेरा ख्याल है अच्छा भाई ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं उस चेकलिस्ट के साथ जो हमने पहले भी शेयर की हुई थी. और चेकलिस्ट का मकसद यही है कि आप उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें जिनके अंदर आपको लगता है, जिनका आपको बिजनेस समझ में आता है, जिनका रिटर्न है, जिनका पीई रेशियो जो है वो मुनासिब है. तो और यही सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं किसी भी आइडिया, किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए. और यही चीज़ें हैं जो एक आइडिया भी जनरेट करती हैं. यानी आपको आइडिया कौन सा स्टॉक ढूंढना है फिल्टर करने में, स्क्रीनर यूज़ करने में भी यही सारी चीज़ें होती हैं जो हेल्प कर रही होती हैं किसी तरीके से. तो अच्छा भाई हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है. इसके अलावा कुछ और आप ऐड करना चाहें? मैं मज़ीद ज्ञान अब बांट नहीं सकता यार, हिम्मत ख़त्म हो गई है, जवाब दे गई है मेरी आवाज़. अगले एपिसोड तक हम इसको जो है मुलतवी करते हैं इस नशिस्त को, और फिर अगले बुलेटिन में इंशाल्लाह हम मज़ीद चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे. और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको पता है क्या करना है. पीबीएच का एपिसोड हमने अभी नया रिलीज़ किया है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम. For more insights, join our limited access Discord channel now.